So I'm recording the lecture as well. Let me give you an example. So for example, we were talking about the car, right? And there's a shaft in the car. Okay, so that shaft is say holding the load of the car. वो बीच में एक shaft लगी है दो tires के बीच में. ठीक हो गया सही है? Okay, so there's a shaft in the middle, right? So and the car is standing at its position. So if a shaft cannot take the load of a standing car, it cannot take the load of a moving car as well then. Why? Because when it starts moving, there would be repetitive load on it. So it is supposed to crack there compared to when it was standing. सही हो गया एक ये चीज ठीक है अच्छा दूसरी चीज से if we have a dam, right, and the dam is there to keep the water contained. So again we know that like the maximum pressure there would be right at the end. ठीक है वो जो रो जी एच वाला जो फार्मूला होता है सही है तो वो जो है इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा एट एनी गिवन टाइम. बट जस्ट एज एन एग्जांपल जस्ट थिंक कि अगर वही डैम हो और पीछे से अगर सुनामी का पानी आ रहा हो एंड इट इम्पैक्ट्स द डैम सही है तो फिर अगर वो पानी उतना ही हो जितना नॉर्मल कंडीशन में हो तो फिर ये हो सकता है कि डैम टूट जाए जैसे सैलाब आता है. ठीक है लेकिन अगर नॉर्मली अगर वो डैम खड़ा हुआ है तो अगर वो नॉर्मल पानी को जो है अगर वो उससे अगर सुनामी को कंटेन कर लिया तो नॉर्मल पानी को भी कंटेन करेगा. ओके सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिजाइनिंग अ टेबल right, and I have to put say 100 kilograms on that table. Okay, so if that table cannot withstand that 100 kilograms, if I put it on the table and the table breaks down on 100 kilogram, okay, and अगर ये 100 किलोग्राम का लोड ऐसे नहीं ले सकता so if I just let the load go और मैं उसके ऊपर 100 किलोग्राम एकदम से फेंक दूं तो फिर भी वो टूटेगा ही टूटेगा ना. इसी तरह से अच्छा I want you to think of a project. टेक कपल ऑफ मिनट्स. आई वांट यू थिंक ऑफ एक प्रोजेक्ट का सोचो और उसमें से क्रिटिकल कंपोनेंट का सोचो. एक सेकंड. जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना तो इसको सिर्फ मेरे पॉइंट्स को कंफर्म ना करो. मैं आपको अक्सर कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा इसलिए कि आप सोचो. ओके सर. यस सर करके पीछे नहीं होना. इसको सोचो कि ओके सो व्हाट इफ यू से अच्छा इसको देखो देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. इमेजिनेशन इज अ ह्यूज थिंग. So just assume that you are a link in the chain, all right, and you might be moving, but the thing is you have there's a tensile load on you, one say on from the left and one from the right. बिल्कुल. And that load is constant, generally constant with respect to the time. ऐसे ही है ना कि ये जो है ना ये चीज जो है ये बस चल रही है. इस हिसाब से इसके ऊपर if your critical point is this particular link, then it is you can take the steady state condition. अच्छा अब देखो इसमें what do we want to do as engineers? We want to take steady state whenever possible. Why? Because it makes our life easier. Say for example if you're doing the same thing in the lab, right, and Noman asks you to do an analysis and obviously everything is in transient, but when if you start doing transient analysis it will take 2-3 days to simulate one problem. So it's not only the learning which you need to do, right? It's not only the learning कि आपने steady state transient analysis लगाना कैसे है वो मसला है लेकिन that's not an issue. The issue is it will take so much computational resources. तो जब वो आपको कहेंगे कि यार अब इस चीज का एनालिसिस करो तुम्हारी मर्जी जिस चीज से करते हो करो तो जब आप ट्रांजिएंट करने लगोगे ना तो वो आपका एक हफ्ते में एक मसला भी हल नहीं होगा. ठीक है सर. ठीक हो गया.